Implications of human population growth. Implication of human population growth में आता है फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी एक मेजर पॉइंट है. जब ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो करती है तो definitely they required good quantity of large amount of food has to be stored by the government. Then the negative impact is this can leads to the over farming. Over farming means what? Over farming, that means by the natural process. Let's take an example. If we are cultivating wheat for 1 acre, the average is for near about 8 to 10 quintals. What farmers do is they do over farming. They put extra chemicals. Then they try to sow for the hybrid seeds that will give a large amount of production, nearby 14 quintals per acre. So what will happen is, due to this over farming, the quality of the food will decrease. Then there will be a lot of chemicals added, which will be leads to the health effect. Then soil degradation एक point आता है. Soil degradation, lot of use of that pesticides and fertilizers, unnatural fertilizers. Then this will leads to the soil degradation होता है. And need for the more land for the agriculture. हमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उससे डिफॉरेस्टेशन होता है. द ईच एंड एवरी पॉइंट इज को रिलेटेड. इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस. इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या होता है? अ लार्जर पॉपुलेशन कैन प्रोवाइड अ लार्ज लेबर फोर्स. जितना ज़्यादा लोग रहेंगे तो हमें लेबर फोर्स अच्छी रहेंगी, तो इकोनॉमिक एसेट्स अच्छा रहेगा हमारा. इकोनॉमिक एसेट्स अच्छा रहेगा, इंडस्ट्री में काम करने में लोगों में दिक्कत नहीं आएंगी. बहुत सारे लोग हमें अल्टरनेट मिलेंगे. लेकिन अल्टरनेट मिलने का एक ड्रॉबैक ये भी है कि वहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ड्यू टू the uncertainty. If the person who are willing to work at the lower salary, then the company will not hike the salary. Then many of the people will be migrating from one location to the another location. Then इसका ड्रॉबैक ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अगर ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया तो then there will be a loss of employment, and it will be also leads to the unemployment. If the job opportunity do not keep in the space, इस बोले तो लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी हो जाएंगे और पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा. देन the humans needs to find an alternative like self business. Now social and political stability. Social and political stability is one of the important point. जब रैपिड ग्रोथ होता है ह्यूमन पॉपुलेशन का, तो उसमें एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि इंस्टेबिलिटी आ जाती है. इंस्टेबिलिटी क्यों आ जाती है? क्योंकि देन वी हैव डिफरेंट चैलेंजेस. फर्स्ट बेसिक चैलेंजेस तो हमने बार बार पढ़ लिया है कि नेचुरल रिसोर्सेज का आता है, एग्रीकल्चर लैंड यूज होती है, बायोडाइवर्सिटी का प्रॉब्लम आता है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ह्यूमंस के रिसोर्सेज के ऊपर. Every city has a different area defined, and then there will be a conflict between land, resource, power consumptions, and population decline is in some area can leads to a issue also, like aging of workforce and pension systems. अभी एक नेगेटिव पॉइंट भी ये है कि अगर पॉपुलेशन का डिक्लाइन हुआ है तो वो एक इशू आता है कि एजिंग वर्कफोर्स एंड पेंशन सिस्टम्स. अभी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन पे क्या इफेक्ट देता है? द इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन, वी नीड टू इंक्रीज द हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सर्विस. अगर हम एजुकेट प्रॉपरली नहीं करेंगे तो देन वी कैन नॉट सर्वाइव इन द हेल्थ केयर. प्रोवाइडिंग दिस सर्विस टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन इज चैलेंज. ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हर एक को अच्छी सी हेल्थ एंड एजुकेशन केयर की फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकें, स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज़. डेवलपिंग कंट्रीज़ में हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ डज नॉट प्रोवाइड एनी इंश्योरेंस टू दी पीपल बाय द गवर्नमेंट. अभी डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस. ओवर अ टाइम मेनी सोसाइटी एक्सपीरियंस अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. डेमोग्राफिक बोले तो क्या? व्हेन द बर्थ
डेमोग्राफी बोले तो एक एरिया को हम कंसिडरेशंस करते हैं where birth rates decline as the country develop economically and socially. जो कंट्री डेवलप्ड है और वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, दे हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, दे डिफाइन द पॉपुलेशन लिमिट्स, a couple, 2 children with 2 childs. Then what is the implications of human in global migration? Population growth in one region can lead to the increase in migration. माइग्रेशन क्यों होता है? माइग्रेशन मतलब ये सिटी से वो सिटी जाना या ये कंट्री से वो कंट्री जाना. जब एक सिटी में बहुत सारे पॉपुलेशन से इंक्रीज हो जाए, सडनली a rapid increase in the population, so people don't have jobs, they don't have quality of life, then what they do is they try to migrate from one city to another city to sustain their life. So maximally from Asia, many people are trying to settle in Europe, US. The major thing is US, European countries are developed countries, Asian countries are developing countries. So in Asian countries we can see that there is no population control, and in developed countries there is a population control system. So according to the study by the WHO, 50%, 80% of the population lives in Asia and 20% of the population lives in the European side. So this global migration, they need man force by the other countries who have a limited population. So people migrate from one country to the another country to have a cultural, economical, political and quality of life. Then environmental conservation. Population growth can put pressure on the efforts to consume the natural habitat. That what we are saying continuously, that this is one of the most important part, that whenever there will be a population growth, there will be a pressure on environment, consumption of natural resource, biodiversity and etc. Now environmental conservation, the same point, increase in the population growth, pressure on the environment, depletion of the resources, natural habitat, biodiversity, need more land for the agriculture, infrastructure, climate change. More people, more greenhouse gases are emitted, contributing to the climate change. Pollution growth can lead to the climate change. Population growth can lead to the climate change. Now infrastructure changes kya hai? More people are there, more greenhouse gases are emitted. So what are the different types of gases are emitted? Like people are using air conditioned CO, chlorofluorocarbon emitted by the refrigerators, ACs, and this are contributing to the climate change. ये gases क्या करते हैं? Contribute करते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज करते हैं, इससे ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है. पॉपुलेशन का जब ग्रोथ होता है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर यूज्ड बाय द पीपल, और वी कैन कॉल एज बाय द सोसाइटी, दैट इमिट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ chemicals which are harmful for our environment. Now the next point is family planning and women's right. Access to the family planning and women rights have a significant impact on the population growth. अभी access to the family planning and women rights has a significant impact. Access बोले तो क्या कि हम right देते हैं कि ये जो एक family है उसको एक limitations लगाया जाएगा, and women should give a right that have a significant impact. Right means what women have a control over their reproductive choice. So birth rate trend to decrease, which can have a positive and social economic effect. Now if the rights is given to the woman, that if she decides that she will have only 2 child or 1 child, and if it's going against the wish of the woman, then there should be some law implemented by the government. Then definitely there will be a birth rate trends to decrease, and which will lead a social and economic effect.